Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on the topic that information sources, in which we try to understand what is meaning by the sources and what is meaning by the information sources. We have been also discussed on that there are different categories of information sources. There are different types of information sources like documentary, non-documentary. Further, documentary are divided among the three categories like primary, secondary, tertiary, and the name indicate the meaning of primary, secondary, and tertiary. As well as non-documentary sources are divided among the formal and informal sources. So if you are try to understand the whole concept of information sources, then you should remember not only the different types of information sources, but you should remember each and every information sources and their example and their meaning. Then it will be understand the whole concept to you. जब आप इंफॉर्मेशन सोर्सेज का स्टडी करते हो तब आपको केवल इंफॉर्मेशन सोर्सेज यानी क्या और उसके टाइप क्या है इतनी ही जानकारी प्राप्त करनी नहीं है, बल्कि हर एक प्रकार का स्टडी करके जो एग्जांपल उसमें आता है उसको समझ के उसका एग्जांपल आपको देना है. ओके. तो इस तरह से आप स्टडी कर सकते हो. तो उसमें इंफॉर्मेशन सोर्सेस यानी कि क्या, उसका स्टडी कैसे करना है, क्यों करना है, इस पर हमें यहाँ पर चर्चा करनी है. तो ये टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ है और अलग तरीके से यहाँ पर इंफॉर्मेशन सोर्सेस यानी कि क्या, सेकेंडरी और टर्शियरी सोर्सेस यानी कि क्या, अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अनदर ऑथर ने यहाँ पर जानकारी दी है. तो विथ एग्जांपल, विथ मीनिंग यहाँ पर सभी सोर्सेस के बारे में जानकारी आपको दी गई है. तो आपको केवल उसकी मीनिंग नहीं समझना है तो इंफॉर्मेशन सोर्स और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है ये समझना है. और फाइंडिंग इंफॉर्मेशन हमें कहाँ ढूंढनी है ये भी आपको यहाँ पर समझ में आएगा. प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है जो हमने पहले ही इसके बारे में प्राप्त की है. सो देयर इज़ नो नीड टू अगेन एक्सप्लेन इट. You can easily understand it. So internet sources we try to understand now. There is a phenomenal amount of information available online via web pages, blog, forums, social media, catalogs, and so on. And there is so much information available, and because such information can be published quickly and easily by anybody at any time, and it is an important that you are vigilant in choosing reliable sources. Okay.
So check the domain name of this site. So if you want to take the information from the internet, first of all you should check the website and its domain, whether it is true or not, whether it is authentic or not, whether it is secure or not. Okay, तो इस सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको ढूंढनी है और तभी उस वेब पेज का आप सही इस्तेमाल कर सकते हो. ओके, हाउ डिड यू अराइव एट सोर्स. आप सोर्स पे किस तरह से जा सकते हो, तो आपको ये सभी जानकारी यहाँ पर देनी है. सोर्स फ्रॉम बिब्लियोग्राफीज, सोर्स फ्रॉम कलीग्स. वेयर डू आई फाइंड प्राइमरी सोर्सेज. कलीग्स यानी कि जो हमारे साथ काम करते हैं तो वो भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं. वेयर वी फाइंड प्राइमरी सोर्सेज, ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर. So you can find it. It is very simple topic we have been discussed, like nature of information sources, meaning and definition of information sources, varieties and types of information sources. Okay, and example of information sources. So I think that it is understood you. Now this topic has been finished. Second topic is given here, electronic information sources. Okay, electronic information sources in library information science. Earlier we discussed that offline information sources. Now we are going to discuss electronic information sources. Means offline information sources, that is called the document information sources. The document information sources which are found in the library, that is called the sources we can discuss here. Information sources. Offline, online sources. तो ऑफलाइन सोर्सेस में डॉक्यूमेंट्री, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस आते हैं. तो इसमें डॉक्यूमेंट्री नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस आते हैं. इसका मतलब जो ऑफलाइन में अवेलेबल होते हैं, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लेस वेयर documentary sources are kept there for using purpose, that is called also library in our own language. So we can make the definition like library, it is a store place where the books are kept for using purpose, for utilization purpose. User used to come in the library and they use the books as a users, so that is why it is called the library. Okay, so non-documentary, formal and non-informal types are come there. And non-documentary means they are not document like books and journals, encyclopedia. They are in the form of device like cassette, DVD, CD, pen drive, like these. That is called as non-documentary sources. And another category is online sources, in which we can find electronic sources. Okay, so electronic sources are come under that
e-journals, encyclopedia, okay, website. So there are many things we can categorize under the electronic sources. Electronic sources have also two types: offline electronic sources and online electronic sources. So online electronic sources mean here search engine also come, databases are also come. So electronic sources are also found in two forms: offline and online. Okay, offline and online sources we can categorize under these. तो ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज कैसे होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। जैसे कि आपके पास डिवाइस होता है, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, तो उसमें आप बुक्स डाउनलोड करके रखते हो या वर्ड पीडीएफ में बुक्स रखते हो, और उसे पढ़ने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, वेब की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम ऑफलाइन भी उसको पढ़ सकते हैं, और ऐसे टैब आते हैं कि जिसमें केवल बुक्स होते हैं, बुक टैब उसे बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक बुक उसमें होते हैं। देयर इज़ नो नीड टू इंटरनेट कनेक्शंस, उसे इंटरनेट कनेक्शन की भी आवश्यकता नहीं होती। तो इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सोर्सेस, इंफॉर्मेशन सोर्सेस किस तरह से होते हैं। तो सोर्सेस, इंफॉर्मेशन सोर्सेस इज कंसिडर हियर ऑफलाइन मेजरली एंड ऑनलाइन। ओके, और ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बुक भी कैसे होते हैं इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है, वो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन हो सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टैब, इसमें ई बुक के फॉर्म में बुक्स हो सकते हैं, और उसे पढ़ने के लिए हमें इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। और कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो सोर्सेस होते हैं वे हमें इंटरनेट सर्च इंजिन के माध्यम से फाइंड आउट करने पड़ते हैं, वेबसाइट पर जाके, डेटाबेस पर जाके, और वहाँ पे ऑनलाइन हमको मिलते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन फॉर्म, दोनों फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस हमें देखने को मिलते हैं। विद द एडवांसमेंट ऑफ एंड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, that is called the ICT. Okay, variety of information sources are appearing beside print media. Electronic sources provide access information to the information that might be restricted to the user because of geographical location or finance. They also provide access to current information as these are often updated frequently. Though there are various search techniques, electronic sources provide extensive links to explore additional sources or related content. In addition, electronic sources are convenient to use since users are able to access information from the library, internet cafe, office, saves time from the comfort their homes at any times of the day. तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स और टेक्निक है, और उसमें कई सारे डिवाइस भी आते हैं, उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रॉनिक बुक को पढ़ सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसके प्रिंट ले सकते हैं,
तो बहुत सारी वैरायटीज और प्रोविज़न आईसीटी के द्वारा हमें मिलती है। ओके, और जब हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो दोनों तरीके से हमें इलेक्ट्रॉनिक बुक एक्सेस करने को मिल सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब जो डेटाबेस होते हैं उसमें बुक्स स्टोर होते हैं और उसको एक्सेस करके हम बुक्स एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन जो डिवाइस होते हैं कंप्यूटर के, उसमें भी बुक स्टोर हो सकते हैं in the form of memory, and we can access it also. Okay, तो हर तरीके से ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन वी कैन एक्सेस द इलेक्ट्रॉनिक बुक्स. So electronic books or sources is nothing but it is a kind of sources which are found in the form of computer, in the form of computer technology. तो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बुक्स या सोर्सेस हमें एक्सेस करने को मिलते हैं तो उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक बुक्स कहते हैं, राइट. तो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है ऑनलाइन, और उसके क्या फ़ायदे. ओवर द ऑफलाइन सोर्सेज मल्टी एक्सेस मीन्स मेनी people access the same database, same ebook, same encyclopedia, and multi-access any remote access mean from many distance anybody can access the this kind of books. So over the ऑफलाइन सोर्सेस, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस हैव देयर ओन एडवांटेज. उसमें मल्टी एक्सेस मिलते हैं. हम देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से. सोर्सेस ऑफलाइन सोर्सेस, ऑनलाइन सोर्सेस और उसमें इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज भी होते हैं. ऑफलाइन दोनों फॉर्म में ये फाइंड आउट होते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक भी कहा जाता है. इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस है ऑनलाइन सोर्सेस, वो ऑफलाइन या ऑनलाइन भी होते हैं. ओके, तो उसके एडवांटेज क्या है हम यहाँ पर देख सकते हैं. पहला है मल्टी एक्सेस. ओके, रिमोट एक्सेस, multi-access means many people access one time. Remote access mean from distance we can access. Okay, तो इस तरह से अलग अलग एडवांटेज हमें और द ऑफलाइन सोर्सेस इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज के मिलते हैं. तो इसके लिए ऑनलाइन सोर्सेज बहुत ही फेमस है. पहले ऑफलाइन सोर्सेज का ज़्यादा यूज होता था लेकिन उस पर कोई लिमिटेशन आता था, लेकिन अब ऑनलाइन सोर्सेज ज़्यादा यूज हो रहे हैं. देर आर मेनी पीपल दोज हु आर कमिंग रेयरली इन द लाइब्रेरी नाउ बिकॉज दे हैव देयर ओन लाइब्रेरी इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल इन देयर हैंड. तो उनको उनकी लाइब्रेरी मिल चुकी है मोबाइल के रूप में, और इट इज़ कॉल्ड हैंडी मोबाइल, हैंडी लाइब्रेरी, hand library. So they will get each and every sources, electronic sources from the library, from the mobile library, so they can fulfill their needs there. So people think that many people criticize that user
rarely use now in the library, but they don't understand they are using the mobile library. Okay, so in this way we can say that multi-access remote access is most important. And we can tell here what is meaning by the mobile library. Okay, there are so many people considered that library is a kind of place where the books are kept only store purpose, but and where the many people criticize that reading of the books is become very less, but they don't think of over the mobile, because each and everything we will get from the mobile, so there is no need to come in the library and read it. It does not mean that you don't come in the library and read it, but their own advantage of mobiles as well as access, multi-access and remote access, and that is why people are using in large extent mobile library over the offline library. So in this way we can say that offline sources and online sources are most important, and which are they we can discuss over that. Okay, they also provide access current information, as these are often updated frequently through their various search techniques. Electronic resources provide extensive link to explore additional resources related content. In addition, electronic sources are convenient to use since users are able to access information from the library, internet cafe and offices are, or at times from the comfort of their homes at any time of the day. So in this way we can discuss over the information sources, and in which we try to understand different types of information sources like offline information sources and online information sources. Then the information sources which are in electronic format and which are communicate via electronic media are called electronic sources. So it is a kind of sources which are found in electronic form, means in the form of computer, laptop, mobile, tab, okay, like this. And with the help of electronic device we can retrieve it, we can read it, so that is why it is called electronic resources. So in short, it is called also e-resources, consisting of various form of data such as a text, image, voice that can be disseminated through different system, means communication system like the internet. Okay, so it is a worldwide platform. Internet is a worldwide platforms, and over that there are n numbers of database, ebooks and e-resources are available. So by access the ebooks database we can retrieve the information anytime, anywhere. So that is why it become famous in very few days. The uses of resources. इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्रोवाइड नंबर्स ऑफ एडवांटेज ओवर द ट्रेडिशनल प्रिंट. तो एडवांटेज क्या क्या है ये हमें यहाँ पर देखने हैं. मल्टी एक्सेस, अभी हमने देखा कि मल्टी एक्सेस मीन्स एट वन टाइम मेनी पीपल कैन एक्सेस द सेम डॉक्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड द मल्टी एक्सेस. ओके,
Then storage capability, the ability to store and retrieve large amount of information. So storage capability is most important there. And if we are working in the traditional library, then there is a lot of problems of space. We have lot of books collections as well as others non-book collection also, but it is very difficult to manage the space. It is very difficult to classify all the books in cupboards. Means the problem of space is come there. But if we are use electronic library, then there is no problem of space is come there. तो स्पेस का प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी में या रिसोर्सेस में हमें नहीं आता है. ओके Then functionality e-resources allow the users to approach the publication by click the mouse on search mode. तो केवल माउस के माध्यम से सर्च करके सर्च मोड पर क्लिक करके कीवर्ड डालकर हम एनी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके so we will get any kinds of information, any kinds of electronic sources on the click from anywhere, from any place, from any times. So that is why it is versatile platform to search the sources from the internet. The electronic resources in library and information science. The use of electronic resources in library began with the development of the machine readable cataloging. तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में सोर्सेस की जो शुरुआत हुई यूज करने की मार्क्स हुई फॉर्मेट इन द मिड 1960 में स्टार्ट हुआ. ड्यूरिंग द माइक्रो कंप्यूटर revolution of the 1980, the library acquired software and database on diskette and offered database on CD-ROM. और 1980 में एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर तैयार किया गया कि जो CD-ROM पर रखते थे. 80 तक की बात आई. जैसे कि पहले जो डेटाबेस थे ऑफलाइन थे, उन्हें एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी. वो CD-ROM पे वो डेटा रखते थे और एडिटेबल था, तो हम उसे सर्च भी कर सकते थे. आज भी ऐसे डेटाबेस है कि जिसको सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, नेट की आवश्यकता नहीं होती, वे CD-ROM पे हमें प्राप्त होते हैं. और फर्दर इन 1990 लाइब्रेरी स्टार्टेड ऑफरिंग वेब बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन लाइब्रेरीज टू इट्स यूजर्स. और फिर आफ्टर 1990 के बाद जो ऑफलाइन डेटाबेस थे, रिसोर्सेज थे, वो हमें ऑनलाइन यूज करने को मिले. तो ये जो डेवलपमेंट है, मॉडिफिकेशन है, जो हिस्ट्री है, ये हम ध्यान में रख सकते हैं और इस पर आपको सवाल भी पूछा जा सकता है. ओके तो ये स्टार्ट कब हुआ? तो 1960 में. और 1980 में क्या हुआ और 1990 में क्या हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है. टाइप्स ऑफ ई रिसोर्सेज कौन कौन से है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन ओपन एक्सेस in commercial form, and these resources are able to meet the user's demands and expectation for quicker, easier access to information. तो उसमें कौन से फॉर्म आते हैं ये हम यहाँ पर देख सकते हैं. तो CD-ROM इसमें आता है. और CD-ROM कहाँ पर यूज होता है? ऑनलाइन में यूज होता है. ई डेटाबेस ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में यूज होता है. ऑनलाइन रिपोजिटरी एंड फुल टेक्स्ट रिसोर्सेज, ई जर्नल्स, ई बुक्स, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ग्रुप और मेलिंग लिस्ट, ये सभी जो प्रकार है वह इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के है. इससे हमें इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं. तो CD-ROM compact disk read only memory is the cheap
electronic resource of data with user-friendly search software. More than 2 lakh 50,000 text page can be stored, portable and low cost, can be easily transferred to any storage device with the supporting device. CD technology was first developed by Sony and Philips in the 1970. तो CD टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन हुआ सोनी और फिलिप्स के द्वारा 1970 में हुआ, एज एन ऑडियो फॉर्मेट में हुआ, और इन 1985 कंपनी डेवलप CD-ROM टेक्नोलॉजी. Soon CD-ROM drive for computers were available to जनरल पब्लिक. इस तरह से CD-ROM की जो निर्मित हुई, कब हुई, कैसे हुई, ये हमको यहाँ पर बताया है. तो इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस की जो हिस्ट्री है CD-ROM की, ये यहाँ पर दी गई है. तो एग्जांपल भी यहाँ पर दिया है. लिसा ये पहले CD-ROM पर था, वॉज पब्लिश इन 1969 टू 2005 के दरमियान ये पब्लिश हुआ. इट प्रोवाइड bibliographical information about past and present development in analysis field. It cover 500 periodical from 68 countries in 20 language. Lisa is updated monthly with more than 1000 records. Now it is available online. ये ऑनलाइन अवेलेबल है. सब्जेक्ट कवरेज इन लिसा. तो इसमें सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं. कलेक्शन, डेवलपमेंट, कंज्यूमर हेल्थ, इंफॉर्मेशन, कॉपीराइट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लाइब्रेरीज, डिजिटल प्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन, ई लर्निंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, ये सभी इसमें आते हैं. इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, information literacy, internet technology, library use and users, open access, publishing and book selling, scholarly communication, search engines, semantic web, taxonomies and ontology, world wide web. तो इस सभी प्रकार के जो सोर्सेस है इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेस कहते हैं. तो लिसा पब्लिश 2 types of publications, scholarly journals and conference papers and proceedings. Okay. So in this way we can discuss over that. लिसा पब्लिश 2 types of publication. तो कौन से पब्लिकेशन लिसा द्वारा पब्लिश की जाते हैं. दूसरा ई डेटाबेस, जैसे कि हमने CD के बारे में जानकारी प्राप्त की, अभी ई डेटाबेस के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. तो यहाँ पर डेटाबेस इज लार्जली रेगुलरली updated file of digitization information related to a specific subject of field, consisting of records of union format, organized for ease and speed of search and retrieval. Web enabled database are easily accessible from users desktop through web browser. तो डेटाबेस किसे कहते हैं. डेटा बेस and storage of information, storage of data, that is called the database. So database can be offline as well as online. Okay. Online database means it is found on the web, it is found on the internet. By using the internet we can access anytime, anywhere, any place. So that is called the electronic database, online database.
but offline database different from the online database. It is found in the form of CD or DVD inbuilt of computer device or tab, and we can access from one place only, one time, और सिंगल एक्सेस थ्रू द सिंगल एक्सेस. तो हम इस प्रकार के जो डेटाबेस होते हैं ऑफलाइन, वो कंप्यूटर इनबिल्ट होता है, जैसे कि CD रोम के फॉर्म में हो हमें मिलता है. उसे रिमोट एक्सेस नहीं कर सकते, मल्टी एक्सेस नहीं कर सकते, एनी टाइम एनी प्लेस एनीवेयर एक्सेस हमें नहीं आ सकता. तो इसलिए ऑफलाइन डेटाबेस भी कहते हैं. इसमें और प्रकार होते हैं, फुल टेक डेटाबेस, अब्स्ट्रैक्ट डेटाबेस, अलग अलग प्रकार इसमें आते हैं. जनरल डेटाबेस, सब्जेक्ट डेटाबेस, ये भी इसमें प्रकार होते हैं. कंसिस्टिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ यूनिफॉर्म फॉर्मेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर इजी एंड स्पीड ऑफ सर्च एंड रिट्रीवल. वेब enabled database are easily accessible from users desktop through web browser. So library and information sources कौन से हैं? LIS was developed by librarians from a merger of database from IBSCO and H.W. Wilson, including many unique sources that were never previously. Okay. लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, जिसे हम लिस्ट कहते हैं, was developed by librarians from mergers of database from IBSCO and H.W. Wilson, including many unique sources that were never previously available. This database provides full text coverage, high quality indexing to help librarian and researcher to keep pace with the latest trends in rapidly evolving field of library information science. In addition, it provides comprehensive coverage of the history of library studies as well as access to more than 5,000 indexed author. Content includes full text, इसमें आते हैं journals, more than 440 journals are there, 30 full text monographs are there. Indexing hundreds of high quality journals as well as books and research report and proceedings are there. Thesauri including 10,000 terms and more than 4,000 which preferred terms coverage dating back 19. Subject include automation, care, restorations, catalog like this. तो लिस्ट के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की, और लिसा के बारे में भी हम, लिस्टा के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. So we are going to learn about the e-database and which are the lists we have studied. Now we are going to study LISTA. Library Information Science Technology Abstract, that is called LISTA. Indexes more than 690 periodicals. It covers about 560 core journals, 50 priority journals and 125 selective journals. In addition to books, search reports, conference proceedings with the coverage dating back to the mid 1960. It is the oldest continuously produced database covering the field of information science. Subject coverage including librarianship, classification, cataloging, bibliometric, online information retrieval, information management and more. Okay, so in this way this is also form of electronic database. Emerald. Emerald is a global publisher linking research and practices to the benefit of society. Emerald was the first published in the year of 1967. Emerald जो आहे तो 1967 साली पब्लिश झाला UK मध्ये.
Company managed portfolio over the 219 journals. 290 जर्नल यामध्ये होती. ओव्हर द 2350 बुक्स यामध्ये समावेश आहे. बुक सिरीज वॉल्यूम प्रोवाइड access to 22 journals and 3 book series in library information science. So Emerald works in close collaboration with numbers of academic and corporate organization and association worldwide. तर अशा पद्धतीने आपल्याला वेगवेगळ्या प्रकारचे जर्नल्स या डेटाबेसमध्ये पाहायला मिळतात. एमराल्डमध्ये जर तुम्ही ऑनलाईन या डेटाबेस सर्च केला तर तुम्हाला पाहायला मिळेल एमराल्ड डेटाबेस. वी कॅन सी लाईव्ह एक्झाम्पल. This is the Emerald database. If we are click on this, then the page is open of Emerald inside. Okay, so this is the form, and if you are go through this search, then you will find the article we are searching the information regarding the RFID, and related to the many search we can see here. All the journals we are getting here. Here books are there, journals are there, articles are there. Okay. So in this way, by visiting this Emerald database, you can find out many things. A lista you can also find out here. That is called the IFSCO, also Lista Library Information Science. So such option is given also here. If you are go through these options, then will understand the meaning of this database. And if you want to search any kinds of information from this database, you can find here. This is the search option is there. Okay, I will give the keywords RFID, and we are go through the search, then related all the result we will get. Okay, IFSCO call itself the Lista. We come on again on the home page. Okay, then each and every database we can search over the internet by putting the web address of the database, and we can access with the help of search strategy, with the help of search option which is given on the website, which is given on the database. Okay, so the information given regarding the Emerald database here, how many journals are there, how many books are there. Okay, in quick fact, Emerald database at the end of 2013, Emerald had 58 journals and 3 book series ranked by the Thomson Router. In 2013, more than 25 million Emerald articles were downloaded. In 2013, over the
6 lakh Emerald book series chapters were downloaded. Over the 1 lakh researcher academics authors have contributed Emerald content since 1994. कितने लोगों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है और कौन से लोगों ने रिसर्चर एकेडमिशियंस ऑथर्स यहाँ पर दिया है. Emerald has customers in over 130 countries, contributor in over 160. तो इस तरह से Emerald के बारे में भी यहाँ पर हमें जानकारी प्राप्त दी गई है. JGate is the electronic gateway of global e-journals literatures launched in 2001 by Informatics India Limited. JGates ये भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं. So by visiting this website, we come on the website JGate, Discover Universe of Knowledge. Okay, JGate, it's a short option, short name, and if you go through the search options, then you can search anything. It demand the password. Okay, so it need to register on some database. Without login you can't access such a kinds of database. Such a restriction is given on many database to prevent the unauthorized access, to avoid the cyber crimes, as well as to provide the cyber security. This kind of the credential you should be demand. तर काही डेटाबेस आपल्याला विदाउट लॉगिन यूजर आय डी लॉगिन करता येत नाही. त्यामागे कारण असतात. सायबर सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करणे, सायबर अटॅकपासून बचाव करणे. ओके, त्याच्यानंतर एक इंडिव्हिज्युअल अकाउंट क्रिएट केल्यानंतर आपल्याला त्याचा फायदा घेता येतो. काही पेड असतील, काही फ्री असतील, याचा पण त्याच्यामध्ये फायदा होतो. कीपिंग रेकॉर्ड ठेवण्यासाठी पण त्याचा फायदा होतो. JGates provides seamless access to millions of journals articles. याच्यामध्ये millions of journals आपल्याला पाहायला मिळतात. ऑनलाईन ऑफर्ड नियर बाय 11,428 पब्लिशर याच्यामध्ये आहेत. याच्यावरून किती मोठा डेटाबेस आहे हे लक्षात येतं. इट प्रेझेंटली हॅज मॅसिव्ह डेटाबेस ऑफ जर्नल लिटरेचर इंडेक्स फ्रॉम 36,987 जर्नल याच्यामध्ये पाहायला मिळतात. फुल टेक्स्ट पब्लिशर साईट आहेत. JGate also plan to support online subscription to journals. इलेक्ट्रॉनिक डॉक्युमेंट डिलिव्हरी सिस्टम याच्यामध्ये आहे. आर्काइव सिस्टम आहे. JGate provide access to more than 8,800 all in 1990. 1990 फुल टेक्स्ट जर्नल याच्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याच्यामध्ये सब्जेक्ट वाईज जर्नल्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत. तुम्ही बघू शकतात. JGate फीचर्स काय ते याच्यामध्ये दिलेले आहेत. ही रेफरन्स सोर्सेस अँड रिपॉझिटरी याच्यामध्ये आहेत. रेफरन्स सोर्सेस आर meant for preliminary perusals and causal consultation. These are described as approach materials, as entry reference work, provide basic information on subject. तर रेफरन्स सोर्सेस हे फक्त रेफर करण्यासाठी यूज होतात, त्यांचा वापर होतो. तर अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी बघू शकतो की एन्सायक्लोपीडिया काय काम करू शकतात. दीज आर ऑल्सो डिस्क्राइब ॲज अप्रोच मटेरियल्स ॲज एंट्रीज इन रेफरन्स वर्क,
provide basic information on subject. Types of e-reference sources. Encyclopedia याच्यामध्ये आहे. Encyclopedia of Library Information Science. तर हा ऑफलाईन पण आहे आणि ऑनलाईन पण उपलब्ध आहे. Source consultation reference for almost any library or information profession release related issue. It provides on outstanding resource in 33 published volume with the two helpful indexes. Third edition of encyclopedia was published 2009. It covers topic related to archival science, bibliography, document and general theories, informatics, information system knowledge, management, library information science, museum studies, records management, social studies, information, international in scope. It is available in print, online subscription. So it covered topics related to archival science, bibliography, सभी प्रकार के सब्जेक्ट उसमें कवर होते हैं. और उसकी जो लाइन है, वेबसाइट है यहाँ पर दी गई है, इसको हम क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं. Encyclopedia of Information Science and Technology. Second editions cover information technology in wide range of field, including library, management, education, government, society and more. इतने सब्जेक्ट इसमें कवर होते हैं. और also include short definition of key terms, and the first editions is available in print form. The Encyclopedia of Information Science and Technology is 5 volumes. Encyclopedia with 550 articles, unlike traditional encyclopedia with articles. Okay. ऑनलाइन डिक्शनरी भी हम यहाँ देखने को मिलती है. इफ्ला ग्लोसरी कवर्स मेजर लाइब्रेरी टर्म्स एंड एब्रीविएशंस. ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, दैट इज कॉल्ड ODLIS. तो इसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हमें विच आर रिलेटेड LIS मिलते हैं. ये कैटलॉग देखने को मिलते हैं. ये कैटलॉग इज एन ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेइंग एंटायर प्रोडक्ट डिटेल्स. जो प्रोडक्ट हम लेते हैं तो उसमें उसका डिटेल होता है. ठीक उसी तरह से जब बुक्स जर्नल्स हम लेते हैं तो उसकी डिटेल्स उसमें होते कैटलॉग में. तो ये कैटलॉग में सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है, जैसे कि ऑथर, टाइटल, ISBN, एडवांस सर्च, E33 वगैरह. So thesis is a document submitted in support of candidature of electronic degrees and professional qualification, presenting the author's research and findings. An electronic thesis dissertation, although it can be used to means any thesis representation electronically. It is specially intended for born digital thesis. Okay. List of thesis dissertation in India. Displays open source institution repository, e-prints, Mahatma Gandhi University thesis online, शोधगंगा वगैरह वगैरह. ऑनलाइन रिपोजिटरी, ELIS, e-print in library information science, ये भी हमें देखने को मिलती है. इज एन ओपन एक्सेस आर्काइव फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट. तो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डॉक्यूमेंट हमें यहाँ पर मिलते हैं. OCLC रिसर्च पब्लिकेशन रिपोजिटरी भी हमको देखने को मिलती है, और उसमें कितने डॉक्यूमेंट्स और कौन से डॉक्यूमेंट उपलब्ध है इसकी जानकारी हमें यहाँ पर प्राप्त होती है. ई ज्ञानकोश भी देखने को मिलता है ऑनलाइन. आप इस वेबसाइट पे जाके इसको क्लिक कर सकते, विजिट कर सकते हैं. विद्या निधि ये भी एक पोर्टल है, और इस पर जाकर डिपॉजिटरी को हम विजिट कर सकते हैं. ये जर्नल्स, अलग अलग जर्नल्स
जो ई जर्नल्स पे हमें फाइंड आउट हो सकते हैं, जैसे कि ई जर्नल्स में डिफाइन एज अ सीरियल पब्लिकेशन दैट एग्जिस्ट ऑन CD-ROMs एंड इंटरनेट। तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार के जर्नल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लिस्ट ऑफ सम जर्नल एलाइस यहाँ पर दिए है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरी, देसी डॉग जर्नल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन स्टडीज, सालिस या सालिस जर्नल्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक बुक्स इस पे मिलते हैं CD-ROM या इंटरनेट पे। गूगल बुक्स जैसे कि गूगल पब्लिकेशन पब्लिशर्स, उस पे हम अपना बुक्स डाल सकते हैं, और जो बुक्स पहले डाले होते हैं तो हम उसे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सभी प्रकार की प्रोविजन इसमें है। गूगल हैज़ पार्टनर विद ओवर 20,000 publishers and author and several major research libraries to make their books discoverable through Google Books, while only limited text can be viewed from books still under copyright. The full text of many public domain books, especially those published before 1923, is available. Amazon.com is here, on by visiting Amazon.com we can get numbers of books here. Some example online: Neelam Gunn, Dr. S, Robin A. Stephens. Then mailing list, information science group for mailing list we are going to discuss now, but here we will take short break. Thank you. We have been discussed. Now we are going to discuss library information science groups and mailing list. So as being professional of library and information science, as a student, as a researcher, as a teacher, okay, as a librarian staff, then there are so many groups we have been prepared and we have been joined. So DigiLeaf India, Digital Library India, its aim is to create awareness about the issue relating to digital libraries, and library automation and management means creation, maintenance, standard, archive, software, architectures, how to start, etc. Specifically concentrating on issue related to Indian library. So in this way we can give the example of library group. Then LIS Forum, Orissa LIS Forum, that is a common platform. LIS professional, teacher, researcher, student, all kinds of the professionals are found here in this group, in this forum. And in MLIS, New Millions LIS Professional is also kind of another kinds of LIS group, in which we can find the different types of people, those who are related to our profession. It's exchange views, ideas and opinion relating to the library information fields. Then LIS, Indian Association of Library Teachers in Library Information Science. Those who are doing the teachership or professorship in LIS, for them LIS is established this kind of group. LIS forum is also another type of group. LIS forum is an email based discussion forum for library information professional in India. There are so many people active in this group. It is operated, maintained by NCSI, Indian Institute of Science, Bangalore.
in 1995 with support from NISAT DSRI, Government of India. The importance of e-resources we can discuss here. Provides remote access and easy of access through single points. So already we have discussed about that. It is very easy to access, and anytime, anyway, any place we can access. Remote access is there, multi-access provision is there. That's why it is very easy to use. Anybody can use. Provide ability to link other sources and include multimedia elements. Needless space cannot be misplaced or stolen. E-resource provide access of downloading and printing and retrieval of individual articles. Provide direct access from multiple database and form indexing, abstracting resources. Provide user fast, more convenient and anytime access from home, campus and library. By e-resource, subject can be searched across a range of titles. Issue related e-resources library. So IPR issue is an important issue that present day library professionals are facing in providing electronic information to their users. So IPR is the most important issue in front of the electronic resources, because anybody can copy and paste anywhere without the taking permission of original author or native owner of content. So it is very difficult to prevent such a kind of activities. It is very difficult to plagiarism of content. Okay. Then shrinking budget, most of the libraries are depend on their parents institutions for funding, which may not enough to cover all electronic information. So in this way, electronic things are most important there. Licensing, it's arise the same problems that arise for general electronic content. Lack of skilled manpower, most of the libraries and information center face the problems of lacking of skilled professional trained staff. Lack of infrastructure, ICT infrastructure is still poor in most of the libraries. E-resources are requiring large bandwidth, which is very expensive for libraries. Okay. So at the end of this topic, we can bring out the conclusions after learning a lot of topics under the electronic resources. Now we are bring out the conclusions. Electronic resources are valuable resources not only for library, information science community, but the entire academic and research community of all the discipline. Not only single discipline, but for all the discipline, electronic resources are most important. And all these electronic resources are using academicians, researchers, okay, and those who are not related to this field, academic or research, they are also using these sources. So e-resources are offer enormous benefit to the end users and also offer easy access to use. So what is the main advantage of electronic resources? Multi-access, remote access, anytime, anyway, from any place we can access it without any restrictions. So it is very easy to access and use, and it will save the time, money and energy of users, and it is freely available in wide context, so there is no need to take permission of anybody to use it.
There is no to come in the library frequently to use it. There is no restriction of time to use only in particular time. So that is why it is lot of valuable for users. The libraries are now providing rich collection of e-books and e-journals, database to fulfill the research of and teaching needs of community. And the another important thing is that it save or give lot of space. If we are using the traditional library, there is a problem of space, but if we are using electronic sources, that there is no problem of space, and n numbers of journals, n numbers of books, n numbers of database we can store on the internet. So that's why it is easy to use. The librarian should acquire basic knowledge of electronic resources so that he or she provide right information, right user to right times. So due to the electronic resources, the responsibility of librarian should be increased there, because user don't know how to use it. So if we have a knowledge about the electronic resources as a librarian profession, then we can guide to the users how to use the information resources. That's why we can save the users time, money and energy by providing right users right time their information need. In fact, the electronic resource enlisted above have been great treasure valuable to the library science community, and this can be book great treasures and valuable to the library science community, and this can ebooks be look book marks using web browser for the benefit of students and research scholar. Okay, so in this way we can give the importance of electronic sources. So in this way this topic has been also finished. In earlier topic we discuss over that what is meaning by the sources, different types of sources like a documentary sources, non-documentary sources, offline sources, online sources, as well as electronic resources. We have been discussed over that. So this topic has been also finished. We have discussed on first topic from the third unit, then we have discussed indirectly seventh topic from the unit. So in between some topics are skipped there because in earlier lectures or in earlier topics unit we have been discussed over that, so we should avoid or repetition of this topic. That's why we should skip such a kind of the topic, so it will save our time. We should get the enough time to cover all kinds of the topics belong to the all the units. जो सभी यूनिट है हमारे फर्स्ट टू टेंथ, और उसमें जो 10 सब टॉपिक्स है, ईच एंड एवरी यूनिट इट शुड बी collectively 100 topics. It should be covered within a period within 6 months. That is why the same or similar topics we skipped. That is why we jumped on the 7th topic. Now we are going to take 8th topic from the 3rd unit. Okay, so what is the 3rd topic? 8th topic from 3rd unit: database, bibliographic, numeric, full text, multimedia, open access database. With the help of flowchart we try to understand these. Database, okay. Store of data, that is called the database.
Data mean information and base means store. Okay, that is called store of data. Database have offline database, online database. Okay, then general database, specific or subject database. Okay, then there is another types like full text database, abstract database, general database, subject database, offline online database. Another we can see here bibliographic database, numeric database, textual database. Okay, multimedia, single media database, multimedia database, then open access database, open access database. So in this way all these are nothing but the different types of database. From the name we can understand their meaning. Okay, and we can see the database. Okay, so in this way there are different types of database. So which are they? We see here offline database is there, online database is there, then general database is there, specific database is there, full text database, abstract database, numeric database, and textual database is there, then multimedia open access database is there. So all these are different types of database. Okay, so if you go through this database then you will understand the different types of database. So in first we try to understand the meaning of database, store of data, in which way the data is stored. Okay, and there are many options. With the help of this we can access the data. Online data access through the internet or web browsers, and offline database through the CD-ROM. Okay, and general data means all kinds of the subjects are included there. Specific on particular subject data is there. Okay, full text means descriptive database is there. Abstract only abstract is given there. Numeric only numbers related things are given there, and textual means only text are given there. So by the name or name indicate itself that the meaning of database, so we can understand meaning of database. So database management system, DBMS, are useful to store structured data information. The details have been discussed
in this course. Usually while writing letters or entering continuous text materials into computer applications such as editors and word processor are used. The most popular package used for this WordPad, MS Word, but entering data such as a list of names, person along with their postal address would constitute mailing list, etc. So here data elements such as a name, street address, city, etc. would be associated with the every person in the list. That is why say these are repetitive set of entries for every entry. The best suited package to manage such data are database management system. Several DBMS package like eDBase, Oracle, etc. are available to manage and manipulate such a data information. So DBS means database management system, in which the information is stored in the form of table content. Okay, so which kind of table content are included there, name, title वगैरह वगैरह. जिस तरह से इंडेक्स में हम देखते हैं कि नेम ऑफ बुक, टाइटल, ऑथर, पब्लिशर वगैरह, तो इस तरह से डेटा यहाँ पर फिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फील्ड. और जब हम डेटा में और डेटाबेस में सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन बाय द नेम ऑफ ऑथर, बाय द नेम ऑफ टाइटल, तो हमें पर्टिकुलर नेम से वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन उस तरह से फिट की होती है. जितने फील्ड उसमें होते हैं उतने फील्ड से हम वो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. इस प्रकार की प्रोविज़न वहाँ पर दी जाती है. ओके, तो इस तरह से डेटाबेस यानी कि क्या और उसके प्रकार कैसे होते, क्यों होते, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की. सो हियर वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमारो. थैंक यू.